welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Bollywood celebs extend Janmashtami wishes on social media. Alia Bhatt can't stop blushing as Ranbir Kapoor talks about falling in love with her. Malaika Arora talks about her new business venture, Ahikoza. बॉलीवुड सेलेब्स के बीच दिखी जन्माष्टमी की धूम. शिल्पा शेट्टी ने मनाया लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे. अजय देवगन ने भी इस ऑस्पिशियस डे पर अपने फैंस को दी विशेस. बॉलीवुड में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से की जाती है सेलिब्रेट. इस ओकेजन को लेकर बॉलीवुड स्टार्स बेहद एक्साइटेड रहते हैं और इस फेस्टिवल को स्पेशल बनाने का एक मौका नहीं छोड़ते. आज जन्माष्टमी के इस खास मौके पर शिल्पा शेट्टी से लेकर कंगना रनौत तक सबने इसे सेलिब्रेट किया और अपने फैंस को भी हैप्पी जन्माष्टमी विश की. सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जो लॉर्ड कृष्णा की पूजा सेरेमनी का है. While sharing the video, Shilpa Shetty wrote, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी को. #कृष्णा जन्माष्टमी, #gratitude, #blessed, #divine, बाल गोपाल. शिल्पा शेट्टी के इस पोस्ट पर उनके फैंस ने भी उन्हें विश किया. वैसे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी इस स्पेशल ओकेजन पर अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदी में एक नोट शेयर किया है that read, जब कृष्ण भगवान आपके सारथी हों, तब जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है. जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. हेमा मालिनी टू ट्वीटेड, जय श्री कृष्ण. वहीं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लास्ट ईयर की अपनी एक पिक्चर शेयर करते हुए सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी. शी रोट, लास्ट ईयर आई वेंट टू वृंदावन फॉर बाकी बिहारी दर्शन, राधे राधे. आगे उन्होंने लिखा, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं. Siddharth Malhotra also shared a story on his Instagram to wish his fans on Janmashtami. वहीं कुछ और सेलेब्स जिन्होंने जन्माष्टमी के इस फेस्टिवल को बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ मनाया, उसमें कॉमेडियन भारती सिंह भी शामिल हैं. भारती सिंह ने इस मौके पर अपने सन लक्ष्य का एक क्यूट वीडियो शेयर किया है, जो सभी के लिए किसी आई ट्रीट से कम नहीं है. इसके साथ शी रोट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, #कृष्ण जन्माष्टमी, #love, #गोला, @लक्ष्य_सिंह_लिम्बाचिया, @हर्ष_लिम्बाचिया30. तो कुछ इस तरह लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे को हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने मनाया और साथ ही अपने फैंस और फॉलोअर्स को भी विशेस दी. रणबीर कपूर को आलिया भट्ट से हुआ था लव एट फर्स्ट साइट. रणबीर कपूर की बातें सुन आलिया भट्ट करने लगी ब्लश. रणबीर कपूर ने बताया हाउ ही फेल इन लव विद आलिया भट्ट. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल्स में आते हैं. दोनों ने इसी साल अप्रैल के मंथ में एक इंटीमेट सेरेमनी में एक दूसरे से शादी की है और अब अपने फर्स्ट बेबी को वेलकम करने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं रणबीर कपूर को आलिया भट्ट से लव एट फर्स्ट साइट हुआ था? जी हाँ, रणबीर कपूर आलिया भट्ट को देखते ही उनके प्यार में पड़ गए थे और इस बात का खुलासा खुद रणबीर कपूर ने किया है. दरअसल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशंस में लगे हैं और रिसेंटली द ब्रह्मास्त्र टीम इंक्लूडिंग अयान मुखर्जी, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर वेंट लाइव ऑन सोशल मीडिया. इस दौरान रणबीर कपूर रिवील्ड हाउ ही फेल इन लव विद आवर डार्लिंग्स एक्ट्रेस, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणबीर कपूर said, I guess when Shiva saw Isha, it was very easy for me because it was like how Ranbir fell in love with Alia. He fell in love naturally and how I fell in love with her.
It was love at first sight. जिस पर ब्लश करते हुए आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से कहा, रियली? जिस पर रणबीर कपूर तुरंत आलिया भट्ट से कहने लगे, साउंड्स गुड? जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, आलिया भट्ट रणबीर कपूर की बातें सुनकर कितना ब्लश कर रही हैं। इसमें आलिया भट्ट के क्यूट एक्सप्रेशंस को कोई मिस ही नहीं कर सकता है। Well, we must say, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों की ये केमिस्ट्री उनके फैंस की भी एक्साइटमेंट बढ़ा रही है, जो रणबीर कपूर आलिया भट्ट को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने का अब और वेट नहीं कर सकते। बता दें, ब्रह्मास्त्र में फॉर द फर्स्ट टाइम रणबीर कपूर आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। साथ ही इस अपकमिंग रिलीज में अमिताभ बच्चन, मोनी रॉय और नागार्जुन भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। वैसे आलिया भट्ट इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज डार्लिंग्स की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं, which premiered on OTT platform. वहीं दूसरी तरफ all the major Hindi releases which arrived in theaters have failed miserably in pulling in moviegoers. ऐसे में अपने एक recent appearance के दौरान आलिया भट्ट addressed Bollywood's ongoing lean patch. Alia Bhatt said, I think it's a tough year for Indian cinema. We should just be a little kind to Hindi films. We say it is tough for Bollywood, but are we really counting the overall number of films that have done well this year? Even in the South Indian film industry, all their films have not worked. Well, इस साल रिलीज हुई जिन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस मिली है, उसमें द कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो के साथ आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी भी शामिल है। And we just hope 9th सितंबर को रिलीज होने वाली आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र सबकी उम्मीदों पर खरी उतरे। Hello and welcome. This is Parul Sharma and you're watching Zoom TV. I have with me the gorgeous boss lady, Malaika Arora in the house. Hi Malaika. Firstly, huge congratulations on bringing Ahikoza to, I hope I'm pronouncing that right, Ahikoza to India. But it just sounds so good, Ahikoza. It's very classy and I wanted to get it right. So firstly, big congratulations on that. Now I'm going to do a little wordplay. Tell me what got you interested and then invested in the brand. I think they go hand in hand. Only if you're interested would you want to be invested. And I think for one, the first thing that always hits me is if there is a lady, if there's a woman behind the idea, behind a business, behind a thought. For me, that in itself is a huge attraction for me, because I feel I'm always somebody who's always wanting, to be part of anything that has a woman's voice behind it. And I'm really happy that I met Namrata, because I love the way she thinks. I think she's so clear and sorted in her head. And I like that. And I think we kind of really connected, and I think our visions really kind of came together. On the topic of women, that's the perfect segue for my next question. Being a successful woman in business, how important is it to have that financial freedom, especially as a female? And what advice would you give to budding female entrepreneurs just kind of who are waiting to step into the business? There's something that I've always believed in, is always being financially independent. I mean, in whatever way, whether it's small scale, big scale, I've always said that. I think I'm the kind of woman, through my years, I've always said that to everybody around me as well. I mean, all my friends and I'm like always pushing them to do something, to always move ahead, to always have a backup plan, to always have plan B, because I feel it's very, 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 very important to be financially independent. And a lot of women feel once they're married, once kids, it kind of, that whole dream that they would want to have or pursue kind of gets crushed. It gets, and it's fine. It's totally fine, because I think, sometimes just wanting to take to motherhood or bring up, get your family together, take care of your family is all fantastic. But I think a sense of being financially independent is very, very important. So I'll always promote female entrepreneurs. And we are totally here for that. On the topic of support, now support is important to anybody in all aspects of life. You have a very, very strong system around you. We've seen the ladies kind of putting out the bags and the hashtags and all of that. Well, that's what our hashtag stands for. It's hashtag Ladies of Ahikoza. I think it's a beautiful hashtag, and it pretty much resonates with how we see it.
So can we expect any of like your OG friend gang from the industry to maybe come out and support and like be a part of the campaigns in the future, do you think? I know a lot of them are attending also here today. Well, I think the possibilities are endless. We should keep our minds open to those possibilities, and I look forward to associating with a lot of the lovely ladies and make them part of the ladies of Ahikoza family. We can't wait for that. On the topic of support, your biggest hype man is obviously Arjun. Please tell me, what does he feel when you go into a new venture? Like, how does he support you when you go into a business venture? What is that support sort of like? He says, "Whoa, baby, you've done it." Well, of course, he's very, very supportive. In fact, he is all for women empowerment and all for supporting women and encouraging. He's surrounded by women in his life, and women who really, really, make that ecosystem around him, and who have really nurtured him. So, for the man that he is today. So he's always rooting for him. We love that. And lastly, Namrata said something really beautiful about you when she was talking about why she sort of... Hi Namrata, shout out. Hi. We have the lovely founder of the brand, Namrata, with us. Namrata said something really wonderful about you. Hi, wave to the cameras. She said that why she went into business with you, one of the things was by following her passion and staying true to her ethos, Malaika has become an example of breaking stereotypes in the film industry. Firstly, please tell me what your association was like and why that was important to you, and then I will ask you my second part of the question. As a founder and designer, typically you'll find either a founder, designer, entrepreneur, but I'm a merge of all three. So for me, who I onboard for the brand has to be super close to my heart and not just an ideology of strategy as such. And Malaika was actually my first choice, and it's a funny story, like life is serendipitous and a little bit of Instagram stalking, just a little bit, we've all been there. And that's Thank God for it. And that's how our, paths kind of crossed and stuff. And for me, I think she has so much gumption and poise and is authentic to who she is, whether that is her personal life or her business choices and everything like that. And for me, I was like, that is the Ahikoza woman, So it's a very proud moment for me to onboard her as an investor, a brand messiah. I keep using the word messiah because she lives, walks, and talks to the brand, and she does so much more than what is asked of her. And I was so humbled by, the short span of getting to know her and what she was about as a person. And I really mean it. And business can be tough, and entrepreneurship can be very, very isolating. But every time I would ask her for something or run an idea by her, she not only showed up as an investor, but a true custodian of the brand. So that's how I view her. And I'm super excited that she is the quintessential, woman of Ahikoza. And so those are my... That's honestly lovely to hear. How does it feel when, like, you being the fact that you break stereotypes, that is the reason why people want to associate with you and really appreciate that about you? Because it must be like a wonderful, proud feeling, right? Well, I don't think I set out to be breaking stereotypes. I don't think that was my agenda of sorts. But I think that's part of maybe my upbringing, the kind of person that I am. It's clearly embedded in me. I get that from my mom. And again, I come from a household of pretty matriarchal. It's all mostly strong women. So I think that's the kind of upbringing we've had. That's what has been inculcated in us. And I think life's choices, the way I saw life, the way opportunities came my way, or the way things unfurled in front of me, it kind of just pushed me to want to break stereotypes. And I think I've always been that kid who was different, who was always said, she's a bit gawky, oh, she's a bit this, oh, she's a bit that. So I think those, all of that kind of just made me want to be the person that I am, and I'm really glad. And I don't think any of it would be possible without the support we have in our lives. I think that is something I keep harping on, because I think the support in my life really means everything to me. So yeah. Well, you ladies have our full support. Thank you so much for joining us here at Zoom, and good luck to you guys on your entrepreneurial journey ahead. Thank you so much. Coming up on the show, is Jacqueline Fernandez losing projects after being named in Sukesh Chandrasekhar case?
जैकलीन फर्नांडिस के हाथ से निकल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़े नाम की वजह से जैकलीन फर्नांडिस को कोई नहीं कर रहा है साइन। क्या जैकलीन फर्नांडिस को फिल्म मेकर्स नहीं लेना चाहते हैं अपनी फिल्मों में? जैकलीन फर्नांडिस का नाम जब से सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा है, उनकी मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर के एक्सटॉर्शन केस में जैकलीन फर्नांडिस भी अक्यूज्ड हैं और ऐसे में अब न्यूज आई है कि जैकलीन फर्नांडिस को बॉलीवुड में कोई साइन नहीं कर रहा है। कोई भी फिल्म मेकर जैकलीन फर्नांडिस के साथ नया प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है। अगर जैकलीन फर्नांडिस के लास्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो बच्चन पांडे और विक्रांत रोना में नजर आई थी, लेकिन वो फिल्म्स भी उन्होंने पहले साइन की थी। ऐसे में रिपोर्टेडली उनके पास कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग शी हैड बीन लूजिंग वर्क रैपिडली आफ्टर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स मल्टीपल समन्स। The recent films that she's been seen in, like Bachchan Pandey and Vikrant Rona, were all old projects. No one is signing her for new films considering the uncertainty. यानी फिलहाल बॉलीवुड जैकलीन फर्नांडिस के साथ काम करने से बच रहा है। वैसे जब जैकलीन फर्नांडिस का नाम चार्जशीट में आया था तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा था जिसमें शी wrote for herself, "Dear me, I deserve all good things. I am powerful. I accept myself. It'll all be okay. I'm strong. I will achieve my goals and dreams. I can do it." वहीं इस पूरे केस पर जैकलीन फर्नांडिस के लॉयर का कहना है, she has always cooperated with the investigation agencies and attended all the summons issued till date. She has handed over all the information to the best of her ability to the enforcement directorate. The agencies have failed to appreciate that she was cheated and conned into this matter. She is a victim of larger criminal conspiracy. Well, ऐसे में देखना ये होगा कि जैकलीन फर्नांडिस को बॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स मिलना कब शुरू होते हैं। Allu Arjun with wifey Sneha पहुंचे न्यूयॉर्क for the annual India Day parade as India marked the 75 years of independence on August 15th. Recently, superstar Allu Arjun को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर क्लिक किया गया, जहां he was looking all stylish and perfect. बता दें, annual Day India parade को Allu Arjun लीड करेंगे and playback singers शंकर महादेवन and कैलाश खेर will also attend the parade. सलमान खान लेह लद्दाख की खूबसूरत वैलीज में अपने लॉन्ग हेयर फ्लॉन्ट करते आए नजर। रिपोर्टेडली सलमान खान इन दिनों वहीं अपनी नेक्स्ट कभी ईद कभी दिवाली विच इज नाउ टाइटल्ड भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं। रिसेंटली सलमान खान को पूजा हेगड़े के साथ मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट भी किया गया था और अब सलमान खान ने लेह लद्दाख से पोस्ट की है अपनी ये पिक्चर विद द कैप्शन लेह लद्दाख। इन द पिक्चर वी कैन सी सलमान खान फेसिंग हिज बैक टुवर्ड्स द कैमरा। ही कैन बी सीन वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट ओवर ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक शूज। इस पिक्चर में जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन खींचा वो है सलमान खान का हेयर स्टाइल, जिसमें वो लॉन्ग हेयर में दिख रहे हैं। सुजैन खान और अरसलान गोनी ने डबल डेट की एंजॉय विद करिश्मा तन्ना एंड हर हस्बैंड वरुण बंगेरा। रिसेंटली इस डबल डेट की एक सेल्फी करिश्मा तन्ना ने अपने सोशल मीडिया पेज पे की शेयर। आपको बता दें, पिछले दिनों सुजैन खान और अरसलान गोनी की शादी को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग बज़ था। हालांकि इन रूमर्स पर हंसते हुए अरसलान गोनी ने साफ कहा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे अपनी अपकमिंग रिलीज लाइगर को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं और इनकी इस एक्साइटमेंट को फिल्म के प्रमोशंस के दौरान भी देखा जा सकता है। रिसेंटली विजय देवराकोंडा ने एक ट्रांजिशन वीडियो शेयर किया एंड इन द वीडियो विजय देवराकोंडा एंड अनन्या पांडे looked hot as they twinned in black. While sharing the post, the Arjun Reddy actor wrote, "Hello India, full love to you. #Liger." विजय देवराकोंडा के इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। Arjun Kapoor has shared a hilarious video of Ranbir Singh. इस वीडियो में सुपर कूल रणवीर सिंह एक रैप सॉन्ग पर ग्रूव करते और लिप सिंक करते दिख रहे हैं। बता दें, रणवीर सिंह का ये वीडियो मुंबई में रिसेंटली लॉन्च हुए एक रेस्टोरेंट का है और इस इवेंट के लिए रणवीर सिंह वाज ऑल डेक्ड अप। वेल, रणवीर सिंह के इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सिंगर और कंपोजर अर्जुन कनुंगो ने लिखा, "The real Slim Shady at Ranbir Singh, along with a sunglasses emoji and a heart emoji." बुलबुलैया 2 आया था ना सर। बुलबुलैया 2 आया था। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? पिक्चर देखिएगा। ये देखिएगा। अच्छा, थैंक यू। फोटो खिंचाना सर। खींचो खींचो खींचो।